Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us. A very good evening also. Okay, so your last session was about focusing, developing focus, and there was an activity that was given to you to perform as well on your own for a little bit. थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कोई रिकैप कर लेते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए हमारी मेमोरीज एंड देन वी विल कंटिन्यू अगेन प्लीज रिमेंबर 7:30 बजे हम ब्रेक लेंगे नमाज की एंड देन इन 10 minutes आफ्टर सेइंग आवर प्रेयर्स वी विल कम बैक एंड वी किक ऑफ अभी तक जो स्केड्यूल में चेंजेस हुई हैं इफ देयर इज एनीथिंग दैट एनीवन वांट्स टू से कोई वीडियोस अभी रिसीव नहीं हो रही हैं ये सब स्ट्रीमलाइन हो चुका अब so I want feedback about that also. Yesterday there was a bit of a situation and there was an individual Mirza West, I remember your comment and I mean ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अपने एंड पे बिकॉज देयर आर अदर पीपल हु आर नॉट विलिंग टू लेट इट बी शिफ्टेड राइट सो ये आप लोगों की अपनी कंसेंसस बिल्ड अच्छा जी let's go and have some feedback from the participants about the previous session. Let's do a recap. So कौन start करेगा जी? Let's see, raise of hands and let me just see if the option is available. Yes, it is. G, raise hands. We have 2 hands raised. Muhammad Bilal Bhatt and Mirza Uwais Beg. Uwais, I'll let you go first. So please unmute your mic. G. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. G, Uwais. Sir, in the last class we were discussing about developing focus in our purpose. So, and the next question which followed after that was the reason for next. Then, after you have developed your focus, then what? So, my comment would be that after developing a focus, the main question which arises is the purpose of developing that focus. So the reason why you have chosen this purpose, why you have chosen this path, or why you are considering this option. What next? If you put it in inverted commas, what next? So what? These are the question arises which has to be answered to make that your dream or your focus or your purpose a tangible thing to achieve. More meaningful and tangible and achievable. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Great. Thank you very much, Uwais. Moving on to Bilal Bhatt and then Muhammad Ashraf. Bilal, आप please unmute कीजिए. Hello, sir. Am I audible? Gigi, yes, you are indeed. Assalamu alaikum, everybody. Yes, sir. I have to say, among all the sessions we had before, the last one was my favorite, and I'm hoping to have this sort of sessions again. It was all about having focus in our goals, and you know how the goal setting, how the hurdles comes in a way. Like we talked about having fears in ourselves, and you know some other aspects as well. And it was really a great session. You know, when you talk about having a specific conversation with your own self first, and you know, it really helps us to to rationalize our goals, and you know, to come up with a plan to achieve them. And I have to say, it was I did. Yep. Yes, sir. आपने जो अभी fears के बारे में बात की, that was very important. Thank you for bringing it up. While you're setting your goals and you're trying to develop that focus, and you're trying to look at achievability, realistic, being realistic, etc. Fears automatically come your way. They are self-instilled or instilled by others.
So Mm-hmm. when others come in and say, how will you do it? Have you thought about the possibility of doing it? So bringing in the how question, that is where the fears start coming in. And it is very important that at the onset, you should have complete control over your fears, and that can only come through confidence in achievability of what you have determined, what goal you've set for yourself. Very right. Thank you very much, Bilal. आप कोई last sentence दे रहे थे, इस पे मैंने थोड़ा सा interrupt किया था. बताइए एक, अगर आप want to repeat that. Yes, sir. That's it. Like it really helps to bring up with a plan, and I would like to add one more thing. Talking about the goal setting, apart from the fears and other stuff, I believe there is a thing like there is a lack of urgency that we create in our goals. For example, if I want to achieve something in 5 years, so in order to track that thing, I need to create some sort of urgency that I'm gonna achieve this thing in 6 months and the another thing in another 6 months, so that I can monitor and check my performance against it. And I've realized that most of us don't do this thing, so that's how the other things add up, talking about the fears and also the demotivation and everything. So I would just like to add, I couldn't Yes. add it in previous session. So if you're talking about measure of success when you're setting your goals, that automatically sort of gives you different milestones to park once you have set the final objective, and once you've decided कि आपका measure क्या होगा या आपका target क्या होगा that you'll have to achieve as part of your goal. So thank you very much. Thanks. That's Yes, sir. Thank you. important, useful conversation, Bilal. Muhammad Arshad, your turn, and then Burhanuddin. Bilal, अपना hand lower कर लीजिए. Thank you. जी Arshad. Sorry, Arshad, we can't hear you. You'll have to come closer to your phone, laptop, whatever it is. Is it better now? Slightly better, yes. Okay. So my take from the last session was that. No, I think it's a loose connection or something. You'll have to speak a little louder. All right. Maybe you give chance to someone else, and I'll change my head. No, I don't think. At least I can't hear you. आप ऐसे करें अर्शद, आप अपना जो डिवाइस है उसको एक दफ़ा रीचेक कर लें या रीजॉइन कर लें, एंड देन कम इन. बुरहान, your turn. Burhanuddin. Assalamu alaikum to everyone. Sir, is my voice clear and loud? Quite Hello? loud and clear. Okay, जी, sir. you're audible. लास्ट सेशन में गोल स्पेसिफिकेशन और उससे रिलेटेड डिफिकल्टीज की बात हो रही थी. टीम मेंबर्स में मुख्तलिफ लोगों ने अपना पॉइंट रेस किया उससे रिलेटेड. मैं उसमें से अपना पॉइंट ये ऐड करता हूँ कि बाकी मेंबर्स की तरह मेरा भी एक गोल ये है कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में इस प्रोफेशनल अकाउंटेंट पोजीशन को हासिल कर लूँ विद बेस्ट पैकेज. तो अगर मैं जिस तरह से जीत सर ने कहा कि हाँ सर, उससे रिलेटेड जो सर ने कहा कि क्या डिफिकल्टीज हो सकती है, ये तो मेरा जनरल गोल था ना सर. तो अगर मैं उसको स्पेसिफाई कर लूँ, मतलब अपने पोजीशन को और कंपनी को, तो इससे ये होगा कि मैं अपने आप को बहुत लिमिट कर लूँगा. मतलब मार्केट में मुख्तलिफ सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज होंगे, एग्जिस्ट करेंगे. तो अगर मैं गोल को स्पेसिफाई करूँ तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है मैं अगर लॉजिस्टिक्स को चूज़ करूँ और उसमें से एक ग्लोबल प्लेयर को मैं फॉर एग्जांपल टारगेट करूँ कि मैंने इसमें से पोजीशन हासिल करना है. तो अगर मैं चीज़ों को जनरल रखूँ तो इससे ये होगा कि मैं जितनी भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होंगी मैं सबके लिए ओपन होऊंगा. तो अगर मैं चीज़ों को स्पेसिफिक करूँ तो फिर ये होगा कि मैं बहुत लिमिट कर लूँगा अपने आप को. तो इससे रिलेटेड अगर सजीद सर इसमें Thank you. I jumped in specific. It's a very good example when we talk about specific stuff, this company and this role. But जैसे हमने कल भी बात की थी, that can't be a goal. Why you want a position and a role in a specific company? आप क्यों जरूरत है आपको इसकी ना? So what exactly you want to achieve? होता ये है कि I'm just giving you a general example. होता ये है कि हमने किसी को देखा होता है और उस शख्स ने उस कंपनी में उस पोजीशन पे बैठ के एक सर्टेन इनकम अर्न की होती है,
तो बजाय इसके कि वी गो बियॉन्ड द ऑब्वियस, हम सिर्फ ऑब्वियस पे रुक जाते हैं। ऑब्वियस हमें ये था कि उस बंदे ने एक सर्टेन पोजीशन पे एक सर्टेन कंपनी में जब काम किया तो उसकी कैरियर ग्रोथ थी या उसको एक पैसा मिल रहा था, दैट्स ऑब्वियस वन। बियॉन्ड ऑब्वियस ये था कि आपकी रिक्वायरमेंट वो कंपनी या वो पोजीशन नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट वो इनकम लेवल है। अगर मैं इस वक्त इनकम को एज अ मटेरियल आइटम देखूं, राइट, सो आपका गोल ये होना चाहिए बाय एक्स ईयर यू वांट टू अर्न वाई अमाउंट, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, अब जब आप अपने गोल को स्पेसिफिक कर देते हैं कि मैंने 5 लाख रुपया कमाना है, 5 साल बाद मेरी इनकम 5 लाख रुपया होना चाहिए, ये बड़ा स्पेसिफिक भी है और टाइम बाउंड भी है। जो चीज इसमें मिसिंग है ना, जो चीज आपको बॉदर करती है, वो होती है कि हमारा माइंडसेट हमेशा हाउ से शुरू हो रहा होता है। सो आपके लिए आसान है कि आप ये कहें कि 5 लाख रुपया आपने कमाना है बाय सिटिंग इन टेलीनॉर एज अ हेड ऑफ रेवेन्यू इंश्योरेंस। ठीक है, सो आपको अब लगता है कि ये अब ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक ये था कि आपको 5 लाख रुपया चाहिए। टेलीनॉर या हेड ऑफ रेवेन्यू इंश्योरेंस, वो आपकी अजम्पशंस थी कि दिस इज द ओनली वे टू गेट देयर, और आपने किसी को देखा, सो आपने हाउ का पार्ट ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर दिया, व्हिच वाज फाइन यस्टरडे जब हम कल बात कर रहे थे ना, क्योंकि हम कल बात कर रहे थे स्पेसिफिक होने की। आज हम बात करेंगे, फोकस आ जाता है उसमें। जैसे आप कहते हैं टेलीनॉर हेड ऑफ रेवेन्यू इंश्योरेंस, तो अब आपको पता है कि आपने वो कैसे अचीव करना है, रेवेन्यू इंश्योरेंस क्या होता है, उस तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए। आज और एक सेशन और हम करेंगे, ये गोल सेटिंग पे है। अब गोल सेटिंग जो होगी, वो गोल सेटिंग आपके हाउ वाले पार्ट को निकाल के होगी। आपको वो मीन जरा साइड पे रखने पड़ेंगे और आपको आउटकम की बात करनी पड़ेगी। सो आइडियली जब हम बात करते हैं एक्स ऑर्गेनाइजेशन, वाई पोजीशन एंड जेड इनकम, सो हम उसमें एक्स वाई अननेसेसरी ऐड कर रहे होते हैं। हमारा गोल जेड इनकम होता है इन अ ऑनरेबल एथिकल वे, राइट। सो इट डज नॉट से कि आप कल को स्मगलिंग शुरू कर दें या मतलब कोई ऐसी चीज शुरू कर दें जो कि इलीगल हो या अनएथिकल हो, सो वो हम बात नहीं कर रहे। लेकिन आपने एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया कि आपको 5 साल में इस इनकम लेवल पे पहुंचना है। अब आप देखें कि आपकी ऑप्शंस कितनी ब्रॉड हो गई हैं। ठीक है, सो अब आपकी ऑप्शन जो ब्रॉड हुई है, वो हाउ टू पार्ट ब्रॉड हुआ है, व्हाट पार्ट आपका अभी भी स्पेसिफिक है, टाइम भी स्पेसिफिक है। और 5 लाख की इनकम क्यों चाहिए? क्योंकि आई वांट टू गो एंड हैव सुशी मे बी, और मुझे अबू धाबी में जाके एक बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, मैं चाहता हूं कि मैं हर दूसरे महीने वहां जाके 2 दिन गुजारूं और मैं वहां खाना खाऊं। इट कुड बी माय वेरी मीन रिक्वायरमेंट व्हिच इज ओके, दैट्स माय पर्पस। और आई माइट हैव अ पर्पस कि मैंने इसमें से 5 लाख जब मैं कमाऊंगा, उसमें से 2 लाख टैक्स में कट जाएगा, 3 लाख मेरे पास बचेगा, और उस 3 लाख में से 1 लाख रुपया मैंने किसी की एजुकेशन पे स्पेंड करना है और 2 लाख रुपया मैंने अपनी फैमिली पे स्पेंड करना है। दिस इज स्टिल फाइन, यू हैव अ वेरी लाइक रेलेवेंट पर्पस। ये आपका पर्पस है ना, कि आपको पता है कि ये वाई क्यों आप ये चाह रहे हैं, एंड दैट विल ड्राइव यू। क्योंकि वो जो लाख रुपया या 2 लाख रुपया आप स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली या किसी की एजुकेशन पे, दैट विल गिव यू अ किक। सो आपका पर्पस ना टेलीनॉर है ना हेड ऑफ रेवेन्यू इंश्योरेंस है। आपका पर्पस या आपका वर्क या आपका गोल जो है ना, वो 5 लाख की इनकम लेवल होना चाहिए। और फिर हो सकता है कल को आप डिसाइड करें, जब हम गोल सेटिंग जैसे आज हम कर रहे होंगे और एक नेक्स्ट सेशन में, तो आपको लिख के लाना पड़ेगा। आज भी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, और ये हमारा डिस्कवरी फेज का लास्ट आइटम्स है। इसके बाद हमारा जो सारा कुछ होगा ना, वो रिफ्रेशर में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट 2-3 सेशंस हैं, वी माइट हैव टू गो 3 रादर देन 2, उसमें आपने खाली सफा लेके अपने गोल सेट करने हैं और हाउ टू का पाथवे भी सेट करना है कि आपने वहां तक पहुंचना कैसे है। ठीक है, सो ये 2 काम हम कर रहे होंगे। तो कल का जो एक्सरसाइज थी वो स्पेसिफिक कन्वर्सेशन थी, बट कैन यू इमेजिन जब आप स्पेसिफिक होते हैं कि टेलीनॉर में ना मिलेगी जॉब, तो फिर क्या होगा? आपके सारे फियर ट्रिगर हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट वी रियली वांट टू डू यस्टरडे, कि हमारे फियर्स हमें बहुत सी जगहों पे रोकते हैं स्पेसिफिक होने से। बट गोल सेटिंग जो है, वो गोल सेट करना है, उसमें मीन्स पे अभी हमने नहीं आना। आज और नेक्स्ट 2 सेशंस में हम हाउ टू पार्ट पे आएंगे, अगर हम अपना गोल सही सेट कर लें। अगर गोल में हमने हाउ टू पार्ट या मीन्स डालने शुरू कर दिए, तो वहां पे हमारे लिए चैलेंज हो जाएगा। ओवर टू यू हारून। जी, थैंक यू सजीद, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। आई होप आपको अपना आंसर मिल चुका होगा। I think let's move on to the next individual. Good that we are doing this conversation. ज़्यादा clarity इसमें आ रही है। सजीद, आपके लिए एक comment आया हुआ है, second last comment अगर आप देखें, रिजवान
शहजाद का बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है. आई थिंक एनकरेज करना चाहिए हमें रिजवान को. दैट्स गुड थिंग. कोई हेड ऑफ रीजनल हेड ऑफ मेंबर अफेयर्स भी बनना चाहे तो वो भी अपनी एस्पिरेशंस में डाल लें. दैट कुड बी मेरा क्वेश्चन ये होगा कि what they want to achieve by becoming head of ACCA Pakistan. अचीव क्या करना है? टाइटल तो मतलब रिजवान आज से you are head of ACCA Pakistan. Done. आपको डेजिग्नेशन चाहिए था, you have got that designation. Guys, Rizwan Shehzad is head of ACCA Pakistan today. Your session is recorded also. Yeah. Rizwan, your goal is achieved. Now, what you gonna do about it? How does it feel? Okay, we are totally fine. So, आपका goal next session conduct करना है. Head of ACCA Pakistan is a mean to get there. So let's set that goal, and we can help you to do it. Right? So goal जो है ना, that has to be more specific. ये goal तो आपका achieve हो गया, अब आप क्या करेंगे जिंदगी में? So let's put that till the end of 6 digits. जब तक हम ये चला रहे हैं, Rizwan Shehzad is head of ACCA Pakistan. Guys, please do consider Rizwan as a head of ACCA Pakistan. or Okay. Rizwan, आप change कर ले मेरे साथ title, whatever title, or anybody want to give me any other title, we are fine with the title. आप मेरा ख्याल आपने पहले भी बात की, title doesn't matter. Okay, over to you. All right. Okay. Let's see if anybody else wants to come and comment. I think ये जो हमारे comments on the sideline नहीं चलते रहेंगे. अच्छा जी, जुनैद खालिद ने hand raise किया हुआ है. जुनैद, मैं आपको unmute कर रहा हूँ, and we can quickly go. We have about 5 minutes left, so we'll be very quick. Junaid. Thank you, sir. Assalamualaikum to all. Sir, actually, basically हम लोगों का जो मेन पर्पस जो हम मिस कर रहे होते हैं, स्टैंड आउट कर रहे होते हैं, जिसमें मतलब वो ये है कि जब हमें कहा जाता है कि मोर स्पेसिफिक हो चीज़ों के लिए, तो हमें मतलब इस क्लियर पिक्चर नहीं होती हमारे सामने कि क्या स्पेसिफिक हो. अभी अगर हम बात करें तो जब हम ACCA में थे, मैं एफिलिएट था, तो देन उसके बाद मेरा एक ये गोल था सर, मैं शेयर करूँ जनरली, ताकि लोगों मतलब जनरली आप लोगों से शेयर करूँ सबसे, कि लाइक हम लोगों का था कि हम बिग 4 में किसी तरह भी चले जाएं, नो मैटर व्हाट, के भाई कोई भी रेफरेंस हो, कैसे भी हो, हम लोग बिग 4 में जाएं. तो और मैंने एक इंटर्नशिप भी की PwC में, लेकिन बात वही जो सारा भी कह रहे थे कि डेजिग्नेशन, ये बंदे का जो माइंडसेट है ना, वो आपको चेंज करता है, बजाय इसके कि आपको पोजीशन देते हैं या कुछ. जब आपका टूल सेट हो जाता है ना सर, के आपने ये चीज़ अचीव करनी है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, कि मतलब हम लोगों को ये पता होता है कि हमने ये चीज़ बनना है, बट कैसे वाला पार्ट है वो हमें नहीं पता होता. तो मेरा ये फीडबैक है. Sorry, I was on mute. कैसे करना है, हाउ पार्ट जो है वो, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप. आज जो आपका सेशन रन हो रहा होगा ऑन गोल सेटिंग, अभी मेरी सजीद से बात हुई थी बिफोर द सेशन, उसमें हम कुछ हद तक हाउ पार्ट भी एड्रेस करेंगे. बट देन गोल सेटिंग का फ्रॉम येस्टरडे, दिस इज टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी वन स्टेप फर्दर, बट स्टिल नॉट द फाइनल स्टेज. इस फाइनल स्टेज तक पहुंचते हम एक आधा सेशन और लगेगा, और उसके बाद फिर हम फाइनली आप लोगों के गोल्स जो आपने सेट किए होंगे उनको एज एग्रीड विद सजीद, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड देम, वी विल आस्क देम टू सबमिट देम योर गोल्स टू अस. हम इनको रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम इनको फर्दर लेके चलेंगे. ऐसे करते हैं जी. मलिक शहबाज हुसैन साहब ने हैंड रेज किया हुआ था. मलिक शहबाज, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप अपना कमेंट दीजिए. एक कमेंट किसके बाद गुंजाइश होगी तो मैं फहद मोहसिन से कहूँगा, बाकी लोग जो हैं उनको फिर हम आफ्टर द सेशन, आफ्टर द नमाज ब्रेक, ब्रिंग देम इन. सो मलिक शहबाज. Assalamu alaikum. Very quickly, like why we struggle to set a smart objective.
वो सारे जो हैं स्मार्ट के तो कंटेंट्स हैं, लेकिन what I have learned, there are two things very specific to me. First one being the limits. It includes the fear, it includes the barrier as well. But for me, what I have observed, most of the time, it is the knowledge, because we are thinking within the box. We are thinking all about what we know, what we are aware of. Sometimes it is good to just step out of the comfort zone, step out of the box, and see what are the options. Are we on the right track? और उसमें दूसरी जो चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि sometimes we are restricted by the priorities. We sacrifice ourselves. Most of the time, ourselves is not the priority. We are giving priority to the company or to the family. For goal setting, it is a harsh thing, but we need to be a bit selfish, because at the end of the day, this is my goal, and that's what I'm trying to achieve. So I need to be self-centered a bit. So we do care about other people, but when it comes down to our career, we do need to pay a bit of attention on ourselves. Okay, great. That's your feeling, Malik Shahbaz. And I think, Shahbaz, you're right to the extent that when it comes to your goal setting, you can afford to be selfish. But then there comes a time when you have to become selfless also. And that's when you start giving back to the society. So that is once you have achieved that is when you have achieved the objective, and then you become selfless. Exactly. So ये different stages and phases हैं. So but जिस phase पे हम इस वक्त हैं, of course I agree with you. You have to be very mean and focused. I mean the right word may not be selfish or mean. It will be focused on your objective. Yeah. So thank you very much for bringing this up. This was a good point made. And final was Fahad Mohsen. Fahad, मैं आपको unmute कर रहा हूँ और फिर मैंने एक announcement करनी है. So Fahad, be very quick, please. जी अस्सलाम वालेकुम सर, इससे रिलेटेड मेरा एक ये क्वेश्चन था कि अक्सर हमारे प्रोफेशन में ना कि कभी कभार हमें जो हमारी थिंकिंग होती है, हमें एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए कभी कभार पे कट लेना पड़ जाता है. सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं 150,000 एक मतलब सेट कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में अभी अर्न कर रहा हूँ. वहाँ के जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे जो डिमांडिंग पोजीशन होती है, मतलब लेट सेटिंग इस तरह होती है कि भाई 3-3 दिन आप घर नहीं जाते हो. अब इस एनवायरनमेंट से निकलने के लिए मैं कहता हूँ यार मुझे कोई 80,000 की भी नौकरी देगा ना, मैं कल ही जंप कर दूंगा. अब मेरा गोल है 500,000 पर मंथ अर्न करना. मैं रिवर्स गियर लगा के वो 80,000 पे भी कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट मैं कहता हूँ यार मैं कम से कम मेंटली रिलैक्स तो हूँ. तो इसको आप एज अ सेटबैक कहेंगे, इसको एज अ सेट मतलब स्टेप इन राइट डायरेक्शन कहेंगे? ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है ये चीज. इस चीज को आप किस तरीके से सक्सेस या अनसक्सेस पे वो डिफाइन कर सकते हैं? That's a question. Sorry. Yeah, sorry, I need to interrupt there. Guys, I worked in a multinational and I have got many weeks, and I'll just give you one example of a 1 week where I stayed in office 3 days, went back to home for 2 hours to celebrate first birthday of my elder daughter, my firstborn child, and came back and stayed for 3 days. So ये सेट कल्चर नहीं है, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काउंट करती है कि if you are working on something and you are so driven, you may do that even in a multinational, or that might require you to do that. So it's not about कि आपने रिलैक्स होना है या इस तरह. ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ये आपको दोनों जगह पे मिलेगी. नंबर 1. Number 2, sometimes if you have to jump high or jump long, you have to take few steps back. आप जहाँ खड़े होते हैं वहीं से खड़े आप ना ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं ना लंबी छलांग लगा सकते हैं. So taking a few steps back give you the push to jump high or jump long. So ये बिल्कुल इस पे कोई मसला नहीं है. If you decided to achieve your goal by doing that, that's okay. There's no regrets. There will be a certain tough time and you will overcome that later. Exactly, Sajid. But I think my comment on this would also include that if this taking a step back is in line with your goal, then it's fine. If it is just a spur of the moment decision, then you have to calculate it right. And I mean, if the decision is that fine, I'll switch organizations, but then
take a step back, and then eventually in such and such time I'll probably progress to a position better than where I am right now. I think that could be an ultimate objective that you could then continue to focus on. All right, thank you very much. And 3 minutes into the break already. ऐसे करते हैं, अभी हम ब्रेक ले लेते हैं बिकॉज नमाज को देर हो जाएगी, और उसके बाद मैं आके सिर्फ 2 अनाउंसमेंट्स करूंगा जो कि मैंने भी मैसेजेस में पढ़े हैं, कुछ कंफ्यूजन्स मैं उनको क्लियर आउट कर दूंगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू. सो लेट्स टेक अ ब्रेक. 7:33 by my watch. 7:43 is when we resume. Okay, आप जल्दी से नमाज पढ़ के सब लोग वापस आ जाए. Thank you.
All right, let's continue with our discussion. Yes, police, we just came back from a namaz break. All right, so the two questions or comments that were made, I will just very quickly comment on them and then I'll hand over to Sajid. First question was about the schedule. I think the way the schedule is being run now is that you are the group of members, so group M as we call it. So please have, be very clear, this is group M, all members consolidated. The sessions that we're going to run for group M are going to be on Mondays, Wednesdays, and the unmoderated session on Friday. Okay, I'll repeat, Monday, Wednesday, and Friday. Okay, for the other group, it's Tuesday, Thursday, and Saturday, but that group is for affiliates and students. The level of conversation, of course, there's a bit of a difference between, the level of conversations here in the groups of members and what we see in case of students. So that is what the schedule is. What I'm also going to do is that looking at the attendance pattern, those who have not attended any session at all till yet, of course, we will probably be dropping them out. But the rest of the individuals, I am going to create WhatsApp groups as well. So later tonight, when I'm able to sit down and work on my work on these things, so later tonight I will be able to send out an email with a consent form. Okay, an email with a consent form, and you have to give us consent that with your telephone numbers given and your email address is also, of course, updated. We will have to create a WhatsApp group and we will then run it. So for very quick communication between all the group members, we are going to have multiple social media platforms. So a WhatsApp platform and a LinkedIn platform. Okay, so that's how we're going to continue. I think with that, let's continue. इसके अलावा अगर किसी को कोई ईमेल अभी आ रही है तो प्लीज मेरे साथ कोई ईमेल शेयर करें, and that is because excellent Junaid, you were present in all sessions, that's fantastic. अगर किसी को कोई ईमेल रिसीव हुई है फॉर रजिस्टरिंग और scheduling, मेरे साथ वो शेयर करें ताकि मैं देख सकूं कि वो कहां से जनरेट हो रही है. Okay. The LinkedIn link is not working. ये आप लोग आपस में discuss कर लें. अभी भी I thought there were conversation happening between Tehmina and other members who were saying that there has to be one LinkedIn group. So please decide very quickly and move on. Okay. All right. Thank you very much. I think good conversation and looking forward to an equally enriching conversation today as well. Sajid, over to you. Thank you, Harun. Can you make me a presenter? बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि goal setting or how we can quickly achieve that. So I'm going to give them the simplest way to do that. Sajid, an organizer or a presenter? Presenter. I want to share my screen. Okay, but इसके बाद फिर videos आप खुद run कर लेंगे या Yeah, we will switch back. Okay, all right. Yeah. Thank you, Harun. You're the presenter now. Okay, thank you. So let me know if you can see my screen. It should be white right now. I hope you can hear me okay. Yes, okay. Yes. We can see you. We can see your screen and we can hear you. Okay, great. So let's go with those 3 simple steps कि हम अपना गोल किस तरह सेट करें and how we gonna achieve it. बहुत से लोगों ने बात की कि 5 साल बहुत ज्यादा होते हैं, गोल सेटिंग हमें करनी नहीं आती. If you can just go through these 3 simple steps, you can really do it very quickly, and it would be easier for you to really see your progress. And the first thing is that you have to write down what is holding you back.
So the important thing, understand what is holding you back, right? And then it's a time to say no and just let it go. ठीक है? So write down what is holding you back. आपको क्या चीज रोक रही है अपना गोल अचीव करने के लिए, और उसको लिख लें, say no and let it go. So आपने उस चीज को आइडेंटिफाई करना है and you have to let it go. दूसरा स्टेप इससे भी ज्यादा सिंपल है. इसके बाद once you really figure out that what is holding you back, आपको क्या चीज रोक रही है उससे, and you let it go, mentally you decide that this is not going to hold you back anymore, then write down your wildest and scariest goal. $500,000 a month, and set yourself for 5 or 10 years. अच्छे तरीके से सोचें कि आपका क्या गोल है जो आप अगले 4, 5, 10 साल में अचीव करना चाह रहे हैं, और गोल लिखना है. आपने ट्राई करना है कि आप अपने आप को खुद चैलेंज करें. जब भी आप मीन्स लिखने की, हाउ वाला पार्ट लिखने की कोशिश करें ना, तो चैलेंज योरसेल्फ, राइट योर गोल, और उसको रिव्यू करें कि ये व्हाट है या मैंने इसमें हाउ का कोई पार्ट डाल दिया. ठीक है? सो पहली चीज, व्हाट्स स्टॉपिंग यू टू, व्हाट इज होल्डिंग यू बैक, एंड जस्ट से नो एंड लेट इट गो. उसको खत्म करें अपने ज़हन से, और फिर अपना गोल सेट करें, और उसके बाद कमिट करें कि आपने 1 साल में ये अचीव करना है. कोई 5-10 साल में वेट करने के लिए तैयार नहीं. आपको आपकी एफर्ट लेवल का भी आइडिया हो जाएगा, व्हाट डज इट टेक इसका भी आइडिया हो जाएगा, हाउ पार्ट भी आप फिगर आउट कर लेंगे. तो ये सिंपलेस्ट वे है और फास्टेस्ट पाथ है टू रीच योर गोल्स, which you might set for 5 years, but then you start committing to make it happen in a 1 year time, right? So this is the ideal, easiest way to do, right? So Harun, I'm okay now. You can change that one, and I can stop sharing my screen. So any comment on that? Guys, did you manage to see my screen or no? Sajid, we saw your screen. Okay. I think Arshad has mentioned the comment as well. Wild goals. या वाइल्ड गोल्स हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारे फियर्स होते हैं ना. जैसे कल भी हमने बात की, जब भी हम गोल सेटिंग में आएंगे तो हमारे फियर्स होंगे, तो हमें अपना वो जो फियर है ना, वी हैव टू सेट इट असाइड. सो ये एक बड़ा सिंपल तरीका होता है, वाइल्डेस्ट गोल सेट करें and then work it backward and make it happen in a year. Emotional family pressure. The West wants to ask a question. He wants to be unmuted. Sure, please go ahead. Guys, ये realistic वाली बात जो है ना, ये you have to really come up with that. What realistic? Sir, I have a question. जी. Please go ahead. Sir, the problem I'm facing is I'm a bit confused. The purpose, because I have read a book by Zishan Usmani, अंदर का मुसाफिर. वो गोल सेटिंग और विजन और उस पे बात कर रहा है, और मुझे आपके सेशन की थीम भी उससे बहुत मिलती जुलती लग रही है. द प्रॉब्लम इज कि गोल उसमें वो मैं ये पा रहा हूं कि जिंदगी करना क्या है. मतलब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज भी हैं, आई एम क्वालिफाइड, और मैं पढ़ता भी बहुत हूँ, समझ और मैं एग्जिस्टेंस. अब समझ रहे बात को. मतलब गोल तो मैं जब सेट करूंगा कि मुझे एक चीज आइडेंटिफाई हो जाए कि ये अचीव करनी है. there is something which is not letting me to accept anything. You see, कि मुझे पैसा मोटिवेट है, भाई बहुत पैसा हो, मुझे कुछ ऐसी चीज अचीव करनी है जो आई एम अनेबल टू फिगर आउट माई सेल्फ. And that's why I'm reading that book time and again to identify the clues
and by reading in between the line. And that's one of the reason I'm attending your session very attentively, to figure out the purpose of my existence. To just identify the reason for my existence. I decides to die everything, but I'm still unable to answer this question. I do ask it myself time and again, what's the purpose of my existence? I have achieved so many things in my life. So let me deviate from my own rule, and let's get into a how part. I hope most of the people were able to hear what Awais is asking, that he's struggling to really figure out his purpose of life, and that basically bothering him, and that's creating a confusion. बहुत दफा हम एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात कर रहे होते हैं, हम एक एब्सोल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, एंड वी ट्राई टू लुक फॉर दैट. अगर आप में से कोई फेमिलियर है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग या अजाइल प्रोजेक्ट की जो फिलॉसफी है, अजाइल मेथोडोलॉजी की, सो उसमें आप देखेंगे कि एक you start doing something, you decide a purpose and you start working towards that. And जब आप एक पर्पस, और आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती कि यही आपका पर्पस है, लेकिन आपके टॉप ऑफ द माइंड समथिंग बॉदरिंग यू, यू डिसाइड दैट एंड यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट. एंड ऑफ द डे यू माइट फिगर आउट कि आपका टाइम भी जाया हुआ और कुछ रिसोर्सेज भी जाया हुआ. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच रियली यू एंजॉय. You change it, you start moving in another direction. This is what we call a design thinking methodology या agility methodology, जहाँ पे आप ये काम साथ साथ कर रहे होते हैं और आप अपने आप को खुद टेस्ट भी कर रहे होते हैं, वैलिडेट भी कर रहे होते हैं. इसका पहला स्टेप ये होता है, डोंट डाउट इट. आपको जो भी चीज इस वक्त अच्छी लग रही है ना, दैट मे नॉट बी द एब्सोल्यूट पर्पस यू विल फिगर आउट. अभी हम इसके एक दो एग्जांपल्स भी अभी देखेंगे. सो इट्स मे नॉट बी द एब्सोल्यूट पर्पस, यू मे नॉट बी वेरी कन्विंस्ड कि यही है, राइट, लेकिन आप उसकी तरफ कुछ 4 स्टेप्स लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये नहीं है, और अगर ये है तो दैट विल शेप अप, दैट विल इवॉल्व. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो मुझे लगती है, एंड आई ऑलवेज एंजॉय दैट एग्जांपल, कुरान को जब हम बचपन में पढ़ते हैं ना, तो हमारा एक बड़ा फोकस होता है, बहुत से बच्चों का उस स्टेज पे, वी आर टॉकिंग वेरी अर्ली स्टेज, लेस देन 10, कि हमने ये जो 30 सिपारे हैं ना उनको खत्म करना है. उसके बाद एक स्टेज आती है जहां पे आप उसको समझने के लिए पढ़ते हैं, और आप 14, 15, 16 साल की उम्र में पहुंचते हैं, और आप उसको समझने के लिए तर्जुमे के साथ भी आप देख लेते हैं, कुछ लोग तफसीर के साथ भी देख लेते हैं, एंड देन यू कीप मूविंग ऑन. जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उन्हीं चीजों का मतलब आप पे वाजिया होना शुरू होता है, बहुत सी चीजें आपको आश्कार होना शुरू होती हैं, जस्ट बिकॉज कि आपका लाइफ का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बढ़ रहा होता है. अगर आप उन चीजों को डे 1 पे डाउट करना शुरू कर देंगे और आप उसको उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे ना, तो वो अपने आप को आप पे अयां भी नहीं करेगी, राइट. यू विल नॉट गेट दैट एक्सपोजर, वो खुद चीजें भी आपके ऊपर एक्सपोज नहीं होंगी. सो थिंग्स टेक इट्स ओन कोर्स. सो पहला स्टेप ये होता है, spend some time, and I always suggest 7-8 hours, not more than that. एक दफा बैठे 7-8 घंटे गुजारें and try to plan your life and then start taking steps. Don't doubt that plan. आपको तकरीबन महीने 2 महीने में पता चल जाएगा कि आप सही पाथ पे हैं या नहीं है. Is it something which excites you or not? दोबारा बैठ जाए, चेंज करना, ठीक है. आपको 2-3 इटरेशन से गुजरना पड़ेगा. कुछ लोग पहली इटरेशन में दे विल फिगर इट आउट, कुछ लोग इसको साथ साथ लाइफ में इवॉल्व करते चले जाएंगे. बट इस प्रोसेस का होना जरूरी है, ताकि आपको ये पता हो कि आपने अपने लिए क्या गोल सेट किया है, और उसकी तरफ आप सर्टेन स्टेप्स लेते हैं, पहला माइलस्टोन उसका अचीव करते हैं, एंड डू यू रियलाइज कि नहीं, इट्स नॉट द राइट थिंग, यू चेंज इट, ठीक है. लेकिन ये नहीं होता कि आप गोल ही ना सेट करें. लेकिन अगर आप मतलब चौथी, पांचवी, छठी दफा गोल चेंज कर रहे हैं ना, देन इट्स हैबिचुअल, देन यू आर नॉट कमिटेड टू द गोल. एक गोल को कमिट करें एंड देन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट. आपको रास्ते खुद ही मिलना शुरू हो जाएंगे, और बहुत दफा आप जिस मंजिल पे पहुंचेंगे वो मंजिल डेफिनेटली वो नहीं होगी जो आपने शुरू में सोची थी. इसकी मैं एक और बिजनेस साइड से एग्जांपल देता हूं. आपको बहुत से स्टार्टअप्स मिलेंगे. फेसबुक इज नेवर बीन अ सोशल वेबसाइट, इट वाज अ डेटिंग साइट. लेकिन उन्होंने स्टेप्स लेने शुरू किए और टाइम के साथ चीजें इवॉल्व हुई, उन्होंने अपने गोल्स भी इवॉल्व किए, बट इट वाज नेवर डिजाइन्ड as a social website or a social platform जहां पे लोग आके एडवर्टाइज करेंगे. ये कभी भी ऐसे शुरू नहीं हुआ था. सो शुरू करना जरूरी है. एक दफा बैठे, सोचें, जो भी चीज समझ आती है शुरू करें उसको.
स्टार्टिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा एफर्ट लेती है और समटाइम हमारे फियर्स हमें स्टार्ट नहीं करने देते. So Mr. Wes, I hope that gave you the little bit on a how part, how you can explore it further. You cannot have an absolute assurance कि आपका यही purpose है और यही चीज आप लाइफ में करना चाहते हैं. But when you will start doing something which comes first to your mind और आपने 7-8 घंटे लगा के अगर एक प्लान कर लिया है तो उसके बाद आपको उसमें फर्दर क्लैरिटी भी आना शुरू होगी और एवोल्यूशन भी होगा आपका. And let it happen. Then the rest of the universe will also help you to really get that kind of guidance. Okay, thank you. We have got a couple of hands raised. So Maurice Khan, I'm going to unmute you. आप इस वक्त self mute पे हैं जी. Hello sir, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Sir, my question is regarding the consistency and the passion. I want to share my journey of ACCA. I started just because I saw on ACCA website that after having your ACCA, you will earn 62,000 pounds per year. So my all family members, they were doctors or engineers. I choose this career. So after 1 year or after 2 years, I was of the opinion that I am not that much passionate and consistent because I failed in 2 to 3 papers twice or thrice. So that is thing that I think the मेरी जो consistency और जो passionate वाली जो बात है ये जो है उस जो है मेरे ख्याल से फोकस से भी रिलेट करती है. सो जब फोकस से थोड़ा हम हटते हैं तो ये चीजें जो है हमारी खत्म होती जाती हैं. इस पे मैं आपका एक कमेंट चाह रहा था. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. हम लोगों के लिए पैशन और मोटिवेशन एक चैलेंज रहता है एंड वी विल फिगर आउट ये जो गोल सेटिंग का है ये क्यों होता है हमारे साथ. Feroz Mohammed wanted ke I really wanted to become a CEO of ACCA Pakistan. No, I wanted to work in an education sector where I can have a public profile. Is it that simple? It could be a university, but I was very clear what I wanted and I went for it. And then बहुत सी चीजें during the journey automatically अपने आप को जिस तरह मैंने पहली बात की present करती है as an opportunity, and you have to identify if you are clear in your mind what you want to do, and if that opportunity matches you will pick it up. But motivation हमेशा एक challenge रहेगा. और अभी हम जाते हैं एक वीडियो की तरफ very quickly, and that video is why you will fail in achieving your goal, why you will never be successful in your career. ठीक है, चाहे आप ग्रेट कैरियर देख रहे हैं या गुड कैरियर देख रहे हैं. So it's a very depressing title, why you will never be successful. So Nizam, if you can help us to run that video. उस वीडियो का लिंक आपके पास हैंड आउट पे भी पड़ा हुआ है. जो फर्स्ट वीडियो है हम उसकी बात कर रहे हैं. You can run it on your own device as well if you face any problem, but let's try to run it here. Why you will never succeed, why you will fail regardless whatever you do. So over to you, Nizam.
Thank you, Harun. Thank you, Nizam. And we can stop it here. Any comments? Anybody who managed to watch it on the webinar or otherwise? Any comment in a question tab? Is it terrifying? Come on, Usman Hamid. Okay, so let me invite, we have a 5-minute, try to stay in a 5 minutes, and if you can raise your hand, I can see some people have already. So let me invite our merciful warrior. Assalamualaikum sir. Walaikum salam. Sir, what a lovely day it is in Lahore. लेकिन आपने ये वीडियो दिखा के बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। ब्रीफ उसने बड़ी अच्छी ब्रीफ दी है, डराने की पूरी कोशिश की है उसने, और बिल्कुल एक्चुअली हमारे फियर्स है। वीडियो को शुरू से देखा, उसको इवॉल्व करने की कोशिश की, और जो भी उन्होंने जो स्पीकर था जो भी लिस्ट डाउन किया, उसको अगर हम अपनी जिंदगी की मैच्योर स्टेज पे, जब हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है, जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, वहां से लेके मरने तक, जब भी हम डिसीजन मेकिंग करने आते हैं, वो गोल सेट करने आते हैं, ये सारे फियर वन टर्न बाय टर्न हमारे सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई रिटन फ्यू कि हम ड्रीम्स को फॉलो नहीं करते, और उसकी सबसे वजह हमारे अपने बनाए हुए एक्सक्यूजेज हैं। अब वो एक्सक्यूजेज हमारे इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स की वजह से होते हैं, या हमारी दिमागी फितूर की वजह से होते हैं, हमारी अपनी लैक ऑफ कैपेसिटी या लेजीनेस की वजह से होते हैं हमारे एक्सक्यूजेज हैं, और उनको ओवरकम भी हमने खुद करना है। और फिर हम रिक्वायरमेंट्स फुल नहीं कर सकते, हम अपनी लक को ब्लेम करते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर तो ब्लेम नहीं ना करेंगे, अपने आप के ऊपर कौन इल्जाम देते हैं? हमने तो रात को सोना है ना, हमने तो रात को सोना है। हाँ, we can't see our ugly face हमने तो in the mirror. जो भी बुरा होगा ये अगले बंदे की वजह से हुआ है, हमारी तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर। तो फिर हम जीनियस भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बच्चे पैदा होते ही नहीं जीनियस, वो तो अमीरों के घर में पैदा होते हैं, या वो भी कोई रिक्शा साइकिल वाला होगा जिसके घर वो बच्चा पैदा होता है जो बोर्ड में टॉप कर जाता है। मिडिल फैमिलीज होती हैं, उनके अंदर तो जीनियस पैदा होना बड़ी मुश्किल बात है। तो हम जीनियस भी नहीं है, हार्ड वर्किंग भी, पाकिस्तानी कौम हार्ड वर्किंग तो है, लेकिन फिर जब हमारे ऊपर आती है तो वो करना भी नहीं चाहते। Sorry, Alapkin, I think there is a major disagreement in that. हमारे 4th 5th की किताबों में वो जो लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, that's not the behavior we are known for around the world. At least while we are in Pakistan, we are not considered hard working nation, not at all. हमारी productivity जो है that is 1/3 of the lowest level. अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका के कंट्रीज को कंपेयर करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो है, हार्ड वर्किंग नेशन। सो ये एक एस्टैब्लिश है थ्रू डेटा। बिल्कुल सर, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, जब हार्डवर्क करने का टाइम आता है तो वहां पे हम फिर रह जाते हैं। वी डोंट रियली एक्चुअली गो ऑन दैट पाथ। फिर उसने एक पॉइंट रेज किया जो जिससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, लेकिन उससे एग्री भी करूंगा कि आपको पैशनेट होने के लिए थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करना पड़ता है, वियर्ड बिहेव करना पड़ता है। तो वहां से जब उसने 2 वर्ड कहे ना, तो मुझे फौरन डॉक्टर्स की एग्जाम्पल याद आ, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे जब MBBS करते हैं, तो क्योंकि आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, तो जब मैं अपने कजन्स को देखता था तो मैं इनको कहता था इनको मसला क्या है, ये किसी से बात भी नहीं करते। तो वो ड्यूरिंग दैट MBBS फेज वो इतने स्ट्रेंज और वेird हो जाते हैं कि वो उनका पैशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आसानी से ना बंदा जो शुरू में पासिंग टेस्ट होता है
MCAT, वो पास कर सकता है, फिर MBBS भी नहीं पास कर सकता। तो वो इसकी बात है, मैं इस लिहाज से एग्री करूँगा कि स्ट्रेंथ होना पड़ता है पैशनेट के लिए। और सारी उसकी स्पीच वर्ड थी पैशनेट के लिए कि गुड करियर में बंदा पिस जाता है, लेकिन अगर ग्रेट करियर चाहता है तो आपको अपनी फैमिली को भी साइड पे रखना पड़ता है, आपको अपने हर जो है आपकी प्रायोरिटी उसको साइड पे करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा अपने पैशन को प्रेफर करना पड़ेगा। और उसने स्टीव जॉब्स का नाम लिया, और 2 एग्जांपल्स जो मैं सोच रहा था ये बातें उसकी सुन के, एक फोर्ड वर्सेस फेरारी की एक जो थ्योरी भी है, जो दो लड़ाई, इस लड़ाई पे दोनों कंपनीज बेस्ड हैं। और फिर एक मूवी मैंने देखी थी, अ ब्यूटीफुल माइंड, बेस्ड ऑन अमेरिकन मैथमेटिशियन है जॉन नैश, उसने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ना डेवलप किया था। तो वो मूवी में रसल क्रो ने वो प्ले किया कैरेक्टर, और वो मूवी पैशनेट के लिहाज से एटलीस्ट इन माय पर्सपेक्टिव बड़ी ना बड़ी लेसन को लो। तो फिर एंड पे उसने की लाइन बोली कि पैशन इज योर ग्रेटेस्ट लव, कि जब आपने जो करना है और आपने ठान लिया कि करना है, तो उसको आपको अपना प्यार बनाना पड़ेगा। उसने वो जो फनी एग्जांपल दी कि लव इंटरेस्ट बंदे के बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन शादी बंदा एक ही से करता है, ये जो ऑब्वियस सी चीज है। तो आपको हर जो भी आपने करना है उसमें पैशनेट होना पड़ेगा। और फिर ह्यूमन रिलेशंस की भी उसने बात डिस्कस की कि मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को टाइम देना चाहता हूँ, ये वो एक्सक्यूजेस, दीज आर ऑल जस्ट एक्सक्यूजेस। और एंड पे जो सबसे बड़ा उसने डिलेमा बताया कि आप क्यों नहीं कर पाएंगे और आप अपनी आगे नस्लों को भी क्यों नहीं करने देंगे, क्योंकि पेरेंट वर्सेस चिल्ड्रन की जो पुरानी सोच हमारे अंदर आई है, चलती आ रही है पुराने वक्तों से, कि माँ बाप कुछ चाहते हैं, बच्चे कुछ चाहते हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे यहाँ पे। आई डोंट रियली वांट टू गो इनटू द रीजंस, लेकिन ये एक रियलिटी है, रियलिटी है। तो उसको भी ओवरकम करना पड़ेगा, पेरेंट्स को सपोर्टिव होना पड़ेगा, पेरेंट्स को इंकरेज होना पड़ेगा, ताकि अपने बच्चों की बेटरमेंट के लिए जाए। नो डाउट उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं, उनके लाइफ लेसन जो हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। वो अपनी तरफ से सोच भी होते हैं कि जब मैं इस फेज से निकल गया हूँ तो मेरा बच्चा नहीं फेज है, लेकिन टाइम एवरी डे टाइम इज इवॉल्विंग, दुनिया हर वक्त चेंज हो रही है। तो पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा जहाँ पे वो बच्चे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Thank you. I think we will give somebody else, but it's a very valid and rational reasons. Thank you for bringing it up. If we can request Sumaya here. Thank you so much, sir. Hello, Assalamu alaikum everyone. Point ये था कि whatever I deduced from this video, एक हम लोग dreams या end result तो हम लोग वो कर लेते हैं, but at the end of the day उसका action plan कैसे करना है, और sense of direction की कमी होती है हम सब में। तो और फिर यही होता है कि एक टग ऑफ वॉर चल रही होती है बिटवीन माइंड और हार्ट, और हम लोग वही कर रहे होते हैं कि मतलब करना क्या है, करना कैसे है, वो हमें बिल्कुल नहीं पता होता, और जो हो रहा होता है एंड वी जस्ट गो विद द फ्लो, दैट्स ऑल। और ना उसकी एग्जीक्यूशन में गलती हो जाती है, तो इसी की वजह से थोड़े से मतलब तो वही है, इस वीडियो में यही बताया है उसने, अच्छा बताया, मतलब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि नो मैटर व्हाट, आपको अपने जो भी ड्रीम्स वगैरह हैं उसको आपको परसू करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव के आपको जो भी हार्डशिप्स वगैरह फेस हो रहे हैं। हम लोग फिर डर के बैठ जाते हैं कि नहीं हो सकता, और फिर उसको फिर हम मतलब एंड तक नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से रिग्रेट भी रहता है, बट देन अगेन हम लोग कंटिन्यू भी कर रहे होते हैं। No, thank you, Smriya. Thank you. Okay. And if we can request Wasi Kazmi. Wasi Kazmi. You are on a self-mute, and okay, we move on. Mohammad Umair Khalid. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीडियो पे अगर बात करूं तो जो मुझे इस वीडियो में क्रक्स नजर आया वो एक टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर जो कि बहुत कॉमनली पाया जाता है, वो है एक्सक्यूजेस का। एक्सक्यूज हमारे पास होती है अपनी हर नाकामी को जस्टिफाई करना, अपनी हर खामी को, अपनी हर बुरी आदत को, अपना हर वो बिहेवियर जो हमें
नुकसान पहुंचा रहा होता है उसको हम जस्टिफाई करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो इसका क्रक्स यही था कि एक्सक्यूज जब तक हम रखेंगे हम लाइफ में आगे नहीं जा सकते। तो सेकंड फिर मैं उमर सॉरी मैं आपने बड़ी अच्छी बात की। अब यही जुमले जो है ना इसमें आपने वर्ड हम नहीं यूज करना, मैं यूज करना है। नाउ जस्ट रिपीट दैट, ठीक है? जो जुमले अभी आपने कहे हैं उन्हीं जुमलों को मैं के साथ जरा रिपीट करें। ओके सर, इसमें मैंने जो देखा है वो यही है कि मेरा जिस तरह एक एटीट्यूड होता है कि मैं जो है अपनी नाकामी को, अपनी नाकामियों को, या मेरे अंदर जो भी इस तरह की हैबिट्स हैं जो कि मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं, मैं उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई ऐसी मेरे पास रीजन जरूर होती है जिसको हम एक्सक्यूज कह सकते हैं, बहाना कह सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे जो है लाइफ में भी नुकसान उठाना पड़ा और शायद अभी भी मैं उसका नुकसान उठा रहा हूँ। कुछ मेरी ऐसी अप्रोच जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड हो सकती है, मेरी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी हो सकती है, जिसको मैंने जस्टिफाई किया डिफरेंट तरीकों से और उसने मुझे नुकसान पहुंचाया। बेहतर यही है कि मैं इसको जितनी जल्दी छुड़वा लूँ जान, उतनी जल्दी मैं आगे बढ़ सकता। अच्छा सर, मैं इसमें सेकेंडली मैं एक और बात करना चाहूँगा। ये आपने मुझे कहा तो मैंने से आगाज किया। मैं मिर्जा अवैस के क्वेश्चन को टेकअप करना चाहूँगा। मिर्जा अवैस ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें उन्होंने कहा जी रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी डबल माइंडेड है कि गोल सेटिंग किस तरीके से की जाए, जबकि वो करना भी बहुत कुछ चाहते हैं और उनकी रीडिंग भी बहुत है, मुतालिया भी बहुत है, एक्सपोजर भी बहुत है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, जो मुझे सारी समझ आई उनकी बात से। सर मैं समझता हूँ कि जो गोल सेटिंग में सबसे पहले जो चीज़, गोल सेटिंग से भी पहले जो चीज़ होती है वो प्रायोरिटीज का सेट करना होता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। आप जब तक अपनी तरजीहात को सेट नहीं करते आप गोल नहीं अपना सेट कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, जब तक आप अपना ऑर्बिट ही नहीं पहचान पाते कि आप किस ऑर्बिट में रह के चल सकते हैं। मैं मोटिवेशनल स्पीचेस में एक मुझे जो कमी नजर आती है वो ये कि वो आपको बैठे बिठाए ये यकीन दिला देते हैं कि आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। मेरा इसमें नजरिया ये है कि इंसान बहुत कुछ कर सकता है लेकिन इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। हर इंसान की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो अगर अपनी लिमिटेशंस को पहचानेगा तो उसको अपना पैशन भी मिलेगा, अपना इंटरेस्ट, अपने पैशन भी लेके चल सकता है, अपनी प्रायोरिटीज भी। लाइक अगर किसी की प्रायोरिटी अब्रॉड जाना है तो वो प्रायोरिटी सेट करेगा तो अपना गोल सेट कर सकता है। अगर मेरी प्रायोरिटी नहीं है बाहर जाना और मैं गोल सेट कर लूं कि मैंने कैनेडियन नेशनल बनना है, हाउ इट इज पॉसिबल? No, very true, very true, very true. We will come to a couple of other videos, but very valid observation. I will invite everybody. Umar, I'll come back to you before I miss that one. Okay, thank you. एक फलसफा है और बड़ा फेमस फलसफा है, that is called फलसफा जबर और फलसफा कदर, right? So I think that's a great philosophy to go through. So it's all about कि आप क्या कर सकते हैं, क्या चीज आपकी कुदरत में है और क्या चीज आपकी कुदरत में नहीं है, ठीक है? सो अगर कभी टाइम मिले तो इसको जरूर देखिएगा कि अल्लाह ताला ने आपको क्या वदियत किया है और आप क्या लिमिटेशन उसके ऊपर लगाते हैं। So we will come back to that, but it's a very good philosophy. मैं एक चीज ऐड करूंगा कि क्योंकि हमने अपने आप को डिस्कवर नहीं किया होता। मैंने ऑर्बिट की इसीलिए बात की कि कायनात का जितना सिस्टम है ऑर्बिट्स में चल रहा है। हम जब स्पेस की बात करते हैं, चांद सूरज की बात करते हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज को डिस्क्राइब किया कि हर चीज अपने मदार में है। इसी तरह इंसान भी अपने मदार में, अपनी एबिलिटीज के, अपनी स्ट्रेंथ के, अपने वीकनेस के, तो उसको वो पहचानेगा नहीं जब तक अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेगा। तो वो किस तरीके से पॉसिबल है कि वो चीज अचीव कर सके जिसके लिए वो बने। Yep, no, very true, man, very true. And here we will try to invite Tahmina. And mujhe, Tabinda, if you can raise hand, I really want to hear about the luck part of it. So we will come to luck later. Tahmina, if you can unmute yourself. Yes, I'm here. So what I noticed in the video was that he was talking about a cycle. Actually, he told us that it was a very realistic video in my view, because he told us there are going to be the limitations. You are going to face some of the limitations that are going to look very real to you, because obviously you love your children, you love your family, and you're going to do anything for them. So it's going to be a hurdle, and he accepted that you are going to use it as an excuse.
And it might look real to you, being it's a very logical excuse in all of our world, and it is a definitive excuse, and it's realistic. But if you want to break this cycle, you have to do it now, because next time you're going to see them as your jailers. It was a very strong word, and he was very right about that. That in the future, when you're going to see them, all that love that you once felt for them is going to be gone there, because you're going to view them as your jailers. You're going to see your failures in them. You are going to see that they were the ones who stopped you from achieving your goals. And even it can result in resentments. You might end up resenting them from getting what you really actually was worth achieving. And when you die, you're going to die with full of regrets. So I think he was talking about ending that cycle. He was telling us the reality that you are not going to be happy in the end. No matter how much sacrifices you make, in the end you're going to detest every person you have ever loved. And before you make that mistake, it's better that you now realize that and go for your dreams, achieve them, and then go love your family. Like he said, I don't detest children, I don't kick them when I see them. I'm even now ready to love them. So you will have that phase in your life, but you have to break that cycle now, or else you will be keeping it going on and on in the form of your children. Your children are going to make the same mistakes, they're going to repeat the same mistakes, and the world is not going to end up achieving their dreams and having a better or a happy life. So that's what I concluded. Thank you, Tamina. And here I would like to hear something from Saida Tabinda Jilani, because we are seeing a very pessimistic view. It's talking about luck. Every goal cannot be achieved as we plan and imagine. And Tabinda, if you can share your views, we might be able to help whether or we might go with your opinions, and the group might come back with something else. Saida Assalamualaikum, Tabinda. sir. Walaikum salam. Thank you, Saida. Sir, I think it's not a pessimistic view or not a pessimistic arguments. I'm talking on a realistic basis and seeing and observing other people's experiences as they share. Why I have said this is I can explain, give clarifications for my argument. Well, since day one, we are talking in the group about goal setting and realistic goals and specific goals that we want to achieve in our life. But what I want to say is sometimes we see ourselves responsible for our actions, for our failures, and that is quite true. We are. Tabitha, sorry. Can I set a rule here? एक तो Yes. हम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे और वी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, आई का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और मैं का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे. Sure, sir. Right? चले, please go ahead. I can consider and I can regard myself responsible for every action, for every failure, you can say, if I am unable to achieve something. But what happens if I am unable to achieve a goal, trying more than one times? Yep, that's fine. And then we listen from our peers and our seniors that is not destined for you. That was not destined for you. That's why you were not able to achieve that, despite trying, despite making attempts, despite working hard. So what you say in this regard? I'm not giving a pessimistic view. I'm just sharing a reality. If we go with someone else's opinion, that's still a decision we make. I'll make my decision कि मैंने लाइफ अपनी ओपिनियन पे गुजारनी है या किसी ने जो मुझे बताया मैंने उसकी ओपिनियन पे गुजारनी है, राइट? सो मैंने अपनी ओपिनियन अपने एक्सपीरियंस से डेवलप करनी है या मैं दूसरे की एक्सपीरियंस अपने उस इंटरेक्शन से चेंज करनी है, ये तो मेरा अपना फैसला है ना. मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत आसान है कि अगर मैं एक मुश्किल काम करना शुरू करूं, एंड हारून इज देयर. एसीसीए में हमने बहुत से काम किए इंक्लूडिंग दिस 6 डिजिट्स. इसका मुझे विद इन एसीसीए सबसे पहला जो रिस्पांस मिला था, इवन मेरे बॉस से भी या सुपरवाइजर्स जिसको हम कहते हैं, उसका ये था ना करो, यू विल फेल. ऐसा नहीं होता. लोग मतलब why you want to really spend 7 to 9 का टाइम क्यों करते हैं तुमने. Yeah, we took some very in ACCA और उस पे पहला रिस्पांस यही आता था कि ना करो, किसी और ने नहीं किया ऐसे, ये नहीं तरीका, इसका दूसरा तरीका. हमने कहा नहीं, हमने करना है. As a team we decided we will go with that, and that worked out well.
अगर हम उनकी ओपिनियन अडॉप्ट कर लेते तो शायद बहुत सी चीजें जो आज हो रही हैं विद इन पाकिस्तान वो शायद इस लेवल पे नहीं होती। आज पाकिस्तान को वो ACCA वर्ल्ड में बहुत सी जगहों पे रोल मॉडल देखा जाता है कि अगर ये पाकिस्तान ने ऐसे किया तो दूसरे कंट्रीज भी उसको फॉलो करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर एक दफा आपने माउंटेन एवरेस्ट किसी एक ने सर कर ली तो बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिल जाती है कि ये किया जा सकता है। और हम लोगों ने एक पाकिस्तान में हमारी एक फिलॉसफी थी जब व्हेन वी स्टार्टेड, द फिलॉसफी कॉल्ड माउंटेन्स डू मूव। अगर आपने एक पहाड़ हिलाना है तो आप एक पहाड़ हिला सकते हैं, लेकिन उसके पीछे फिर आपको उतना ही लेवल ऑफ एफर्ट भी डालना पड़ता है। सो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको हमेशा डिस्करेजिंग कमेंट्स मिलेंगे, और वो इसलिए मिलेंगे कि मैं एक बड़ी वो अगली सी बात करने लगा हूं। जर्नल परसेप्शन और बिहेवियर ये होता है कि अगर एक काम मैं नहीं कर पाया ना, तो जब दूसरा करने जाएगा तो मैं उसको हमेशा कहूंगा कि भाई ये काम नहीं होता, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाया तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने मुतालिक तो मेरी ओपिनियन बहुत अच्छी है ना, आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं बहुत टैलेंटेड भी हूँ और मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई दूसरा कैसे कर पाएगा? सो ये हमारी एक अप्रोच होती है जिसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में दूसरे लोगों के साथ when they are making an attempt। और जब हम ये इस तरह की अप्रोच को रिफ्लेक्ट करते हैं, we call it a negative influence। so वो उस जो बंदा एफर्ट कर रहा होता है ना, उसके लिए ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस बन जाता है। और बिकॉज अगेन बहुत दफा हमारे लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि हमें चीजें मुश्किल नजर आ रही होती हैं, हमें एक ओपिनियन भी मिल जाती है कि ये नहीं होता, तो हमारे लिए उसको छोड़ने का एक एक्सक्यूज बन जाता है, rather than हमारे पास ये एक्सक्यूज हो, I have to prove the other person wrong। if he or she can't do it, it doesn't mean nobody can do it। so माउंट एवरेस्ट इसलिए सर हुई थी क्योंकि एक बंदे ने डिसाइड किया था कि अगर आज तक कोई नहीं कर सका तो मैं करूंगा। हालांकि उसको ओपिनियन तो सारी यही मिली थी ना कि कोई नहीं कर सका, लेकिन उसने कर ली। सो दैट्स व्हाट द ड्राइव मीन। सो रिसेंटली मैं एक सेशन कर रहा था, उसमें बड़ा मजे का सवाल आया, हाउ टू डील विद द नेगेटिव पीपल, क्योंकि आपके पास सराउंडिंग में हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी होती है, हाउ टू डील विद देम। तो मेरा आंसर ये था, व्हाई यू नीड टू डील विद देम, इग्नोर देम, दे डोंट एग्जिस्ट। आपको ब्लॉक कर देना है उनको। अगर कोई आके आपको ये कहता है कि ये काम आप नहीं कर सकते, सो उसका पहला रिस्पॉन्स आपका मेंटली ये होना चाहिए, व्हाई आई कांट डू दैट। सो यू रियली हैव टू फिगर इट आउट रादर देन जस्ट एक्सेप्ट कर लें कि मैं नहीं कर सकता। और हर चीज जिंदगी में जब आप स्टार्ट लेते हैं मुश्किल होती है, किक स्टार्ट करना ही सबसे पहला स्टेप होता है, जो सबसे मुश्किल होता है, और उसी पे सबसे ज्यादा एनर्जी और एफर्ट लगती है। बहुत दफा हम चीजों को परफेक्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। मेरी अप्रोच कभी ये नहीं होती कि हम परफेक्ट फॉर्म में कर रहे हैं। मेरी अप्रोच ये होती है कि हम डिजाइन थिंकिंग मोड में चले जाएं, हम एजाइल मेथोडोलॉजी यूज करें, वी विल डू इट, वी विल लर्न इट, वी विल इंप्रूव इट एट द सेम टाइम, rather than staying back और उसको प्लानिंग में और एनालिसिस पैरालिसिस में घुस जाएं और उसको किल कर दें, because that will become very demotivating अगर आप प्लानिंग स्टेज पे रहते हैं। jump there, start doing it, learn it, sometime you will succeed, sometime you learn, right? so आप फेल हो जाएंगे, failure is always an option। लोग आके ताना देंगे, so what, यही होता है ना कि मैं फेल हो जाऊंगा, how it will look in like मेरे कैरियर पे क्या इसके असरात आएंगे, so what। failure is always an option, but not making an attempt is not। doubting your decision is not an option, but start करें, decision change कर लें बाद में, that's an easier part। execution mode में आए, एक दफा टाइम स्पेंड करें, 7-8 घंटे लगाएं, and then get into the execution mode, and you will learn and you will validate that and you will evolve accordingly। लेकिन जब तक आप सिर्फ प्लानिंग मोड में रहेंगे ना, वहां पे मतलब समंदर की साइड पे खड़े होकर आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, यू कांट लर्न स्विमिंग, यू हैव टू जंप इन दैट। आपको स्विमिंग पूल में उतर के ही स्विमिंग सीखनी है, उसके पहले के लेक्चर्स चाहे आप 2 साल करते रहें, दैट विल नॉट मेक यू परफेक्ट। आपको उसमें स्विमिंग के लिए उतरना ही पड़ेगा, आपको उस फियर को ओवरकम करना ही पड़ेगा। सो या देयर विल बी, और ये हमेशा आपके साथ होगा किसी एक सिचुएशन में थ्रू आउट योर 100 ईयर लाइफ स्पैन, जो हम मिनिमम लाइफ स्पैन गिनते हैं 100 ईयर के लाइफ स्पैन में आपके साथ बार बार ये होगा कि आपको ओपिनियन मिलेगी जो नेगेटिव होगी। ये आपकी चॉइस है, यू वांट टू रियली एक्सेप्ट इट और नॉट, और यू गोना आस्क व्हाई कांट आई। सो ये वो जो सवाल होते हैं ना, दैट हेल्प। Okay guys, I know there are a lot of people who want to share something more, but I would invite you to go for another video
5 key methods how to kill your dreams. ठीक है, so आज हम ये सीखेंगे हम अपनी ड्रीम्स को किस तरह किल कर सकते हैं, and they are lovely ways, just like why we will fail regardless whatever we do. जिस तरह की ये वीडियो थी, so now let's go with that, how we can kill our dreams.
Okay, so any feedback, a quick one before we go to the third one. So now we know, हम बहुत लोग थे जो how part सीखना चाह रहे थे, तो एक how part हमने सीखा आज कि how we can kill our dream, right? And बहुत से एक opinions थी कि why we will not succeed, so हमें उसका भी जवाब मिला कि हमारे पास सारे reason है why we will fail not to have a good or great career. So why we will fail regardless whatever we do, right? So हमने how to part में थोड़ा सा explore किया है आज. So अब now we are getting into the goal setting, और मेरा ख्याल है अब gradually थोड़ी सी clarity आनी चाहिए कि when we set the goal there is a journey towards that goal, right? और उसमें effort भी लगेगी, excuses भी आएंगे, हमारी dreams change भी होंगी, evolve भी होंगी, और सबसे ज्यादा जो disappointing चीज होती है वो होती है when you achieve the goal and the sensation or happiness you were expecting that doesn't last for long, and you have to set a next goal क्योंकि आपने वो journey enjoy की होती है. Life, you don't live your life, you don't live for entire span of your life, right? So let me repeat that. You don't live the entire span of your life, you live in moments, और वो moments वो होते हैं जो आप लोगों के लिए create करते हैं या लोग आपके लिए create करते हैं, and that's where you live. So अब आपका फैसला होता है कि आपने उस पूरी जर्नी में कितनी मोमेंट्स क्रिएट करनी है अपने लिए और दूसरों के लिए. और एक बड़ा मजे का सवाल होता है जब हम पर्पस की बात करते हैं या why we exist की बात करते हैं, तो एक सवाल होता है how you want people to remember you when you will not there. जब आप नहीं होंगे, उस कमरे में नहीं होंगे, या if you don't exist anymore, how you want people to remember you. और that will keep changing. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बढ़ता चला जाता है, वो आपका चेंज भी आएगा, एंड इट्स ओके, इट्स नॉट अ फेलियर कि आपने एक गोल सेट किया था, आपने उसको बाद में चेंज कर दिया. दैट्स अ लर्निंग, एंड एवरीबॉडी गोज थ्रू दैट फेज. कोई भी ऐसा नहीं है जो डे 1 पे एक परफेक्ट गोल सेट करता है और उसी पे पहुंच जाता है. होंगे कुछ लोग, बहुत कम होंगे. दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी comes with the experience and exposure and during the journey. So इंपॉर्टेंट चीज है जर्नी स्टार्ट करना. जब तक आप उस जर्नी में नहीं आएंगे, आप बाहर खड़े होकर स्विमिंग पूल के स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं. So you have to jump into the swimming pool to learn swimming. So we have gone through two key areas के हम क्या क्या करते हैं या मैं क्या क्या करता हूँ, and I'll encourage now going forward कि हम लोग हम का लफ्ज और वी का लफ्ज डिस्कार्ड कर दें. अब ज्यादा गुफ्तगू जो होगी वो मैं के हवाले से होगी, पर्टिकुलरली जब हम उसमें नेक्स्ट फेज में एंटर हो रहे होंगे, एंड दैट फेज इज द बिजनेस केस डेवलपमेंट. वहां पे मैं का लफ्ज जो है बहुत ज्यादा होगा, और गोल सेटिंग में भी मैं का लफ्ज यूज हो रहा होगा. लेट्स गो थ्रू द लास्ट वीडियो, और ये लास्ट वीडियो जो है दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू सेट योर गोल. गोल सेटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है. अभी तक जो हमने बात की वो ह्यूमन साइकोलॉजी की बात की, हमने कुछ रिसर्च की बात की कि जब हम ड्रीम्स देखते हैं और उसको फॉलो थ्रू नहीं करते, क्यों नहीं करते, और हम हाउ वी किल इट इन जर्नल. सो नाउ वी विल गो टू जब आपने गोल सेट करने हैं, हाउ यू विल डू द गोल सेटिंग. सो कैन वी गो टू द थर्ड वीडियो.
So final comments, and we will invite 5 people. If you can raise your hand and share. Wasim Rasool, I'll start with you, and Asif Islam, I'll come back to you. Wasim. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो सलाम। जी वसीम प्लीज। सर मैं पहले जो मैंने पहले वीडियो हमने देखी है और उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें तो ये था कि मतलब हम लोग सोच लेते हैं कि हमने एक ओवरनाइट हमारी थिंकिंग होती है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे गोल्स ओवरनाइट ही पूरे हो जाएंगे, और अगर हमने कोई गोल सेट कर लिया है और उसके दौरान हमें कोई फेलियर आई है, तो हम रादर देन उसको ऑन करने के कि मैंने कोई काम स्टार्ट किया है, रादर देन कि जब मैं उस गोल को अचीव नहीं कर पाया, उसको बजाय इसके कि मैं ऑन करूं, मैं दूसरों पर उसको लगा दूंगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी वजह से मेरा जो गोल है वो अचीव नहीं हुआ। तो इसमें मैं अपना शेयर करना चाहूँगा। मैंने जब ACCA स्टार्ट किया तो मेरा ऑब्जेक्टिव था मैंने किसी बिग 4 में जाके आर्टिकल्स करने हैं। तो ACCA मैंने बहुत अच्छा कंप्लीट किया, मैंने हार्ड वर्क किया, सब कुछ किया, और अल्लाह का शुक्र है मैंने डिस्टिंक्शन भी ली। लेकिन ACCA कंप्लीट करने के बाद जब मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि मैंने बिग 4 में आर्टिकल्स करने हैं, लेकिन तब मुझे आर्टिकल्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन उस वक्त मैंने एक गोल सेट किया कि मुझे समहाउ जाना ही जाना है। रादर देन वेस्टिंग माय टाइम 4 to 6 months, I pursue career towards CA. I started CA, and within 6 months I completed the CA enter, and luckily I got selected in one of the big 4 audit firm, Deloitte. And सो उस वक्त मुझे हर कोई, मेरे कलीग्स यही कह रहे थे कि आपने ये ऑब्जेक्टिव क्यों सेट किया, आपको इंडस्ट्री में जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा कि मैंने ये ऑब्जेक्टिव सेट किया तो मैंने इस पे जाना है। अब उस वक्त ये था कि मैंने CA कंप्लीट करना है विद इन आर्टिकल्स। ठीक है, मैंने सेट कर लिया गोल। मेरे कुछ और कोलीग्स भी थे जिन्होंने उस वक्त मेरे साथ ज्वाइन किया और वो भी इसी रूट से ही आए थे। अब उनमें से कुछ लोगों ने CA कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ठीक है, अब उसमें कुछ रीजन थी, मैं उसको पुट नहीं कर पाया, जो हार्ड वर्क चाहिए था वो मैं नहीं दे पाया, और इसी वजह से मैं मतलब उसको अचीव नहीं कर पाया। मैं उसको अब ऑन भी कर रहा हूँ और उसको अब परस्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की हैं उनको फ्यूचर में नहीं करना। तो मतलब अगर आप उसको ऑन कर लेते हो, जो भी आपने गलत काम मतलब अचीव नहीं कर पाया, उसके अंदर क्या वीकनेसेस थी, तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। This is about me, what I want to share with you guys. Thank you. Thank you, Wasim, and thank you for sharing. Faizan Khan, if we can invite you. Faizan Khan. Faizan, if you can unmute yourself. Hello. Ji, Faizan. Assalamu alaikum. Sir, I want to share my journey basically. ड्रीम्स और सर गोल्स ये जो है ना सर चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम के साथ। जैसा कि मैं अपना शेयर करूंगा कि मेरा मतलब ड्रीम था कि मैं बाहर पढूं। सो आई वेंट इंग्लैंड टू, मैं ACCA के लिए इंग्लैंड चला गया। तो वहाँ मैंने क्वालिफाई किया, फिर वहाँ पे जॉब भी की वगैरह सब कुछ चीज़ें की। तो ड्रीम्स जो है ना सर आपके ड्यूरिंग द टाइम जो है ना वो चेंज होते जाते हैं। और जैसे आपने कहा कि जब आप एक चीज़ अचीव कर लेते हैं, जो उसकी हैप्पीनेस होती है ना वो बहुत थोड़ी होती है, मतलब वो हैप्पीनेस नहीं होती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते। ठीक है, जब मेरा भी यही हिसाब था, जब मैं इंग्लैंड चला गया, जब मैंने ACCA किया, मैंने कहा नाउ व्हाट। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा ये प्लान था कि मैं एक जॉब करूँ अच्छी जगह, वो भी मिल गया। ठीक है, उससे पहले मैं जो है ना टेस्कोस वगैरह इधर उधर काम कर रहा था। ठीक है, वो उसमें फिर वो क्या कहते हैं सर, आपको वो जो आपने छोटी छोटी जॉब की होती है ना, तो उसके स्किल्स आपको बाद में पता चलते हैं कि यार वो भी एक स्किल्स आपने डेवलप की हुई है, और वो आपके जो गोल्स आपने सेट किए होते हैं उसमें हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके ये जो सारे स्किल्स हैं ना एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। जैसे कि मैंने पहले सेल्स में जॉब की। ठीक है, तो उस टाइम मेरे जहन में ये था कि मैं ये जॉब इसलिए कर रहा हूँ कि यार मैं अपनी फीस दे सकूँ, मैं अपनी लिविंग जो है ना कॉस्ट जो है ना वो बेयर कर सकूँ। ठीक है, वो मेरे ये जहन में था, इस वजह से मैं वो जॉब कर रहा था, कैरी ऑन कर रहा था। वो मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम ACCA मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि ये मैंने अचीव करना है, ये मेरा एक गोल है। तो इस वजह से वो जॉब हो रही थी। फिर उसके बाद जो है ना सर जब वो लग्जरी भी आ गई वगैरह वगैरह सारा, लेकिन वन थिंग इज मिसिंग विच इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन।
ठीक है। सेटिस्फेक्शन और जो हैप्पीनेस थी ना वो मिसिंग थी, क्योंकि सर हर चीज जो है ना आपके जब आप गोल करते हैं ना वो आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब आप वो अचीव कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप भी आ जाते हैं, क्योंकि आपके साथ कोई फैमिली नहीं होती तो आप सेटिस्फाई, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि यार मेरे अकाउंट्स में पाउंड्स आ रहे हैं, एवरीथिंग इज हियर, बट मैं पैसे पीछे भी भेज रहा हूँ, एवरीथिंग इज ओके, मैं अपनी अच्छी पोजीशन में भी हूँ, जॉब भी है, ACCA भी क्वालिफाइड हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, बट माय फैमिली इज नॉट विद मी। सो वो ह्यूमन रिलेशनशिप आ गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी वालदा बीमार हुई। सो मेरी अब ऑब्वियसली मेरा ये था कि मैं ये जो मेरा जो ड्रीम था कि मैं एक अच्छे पोजीशन पे जाऊंगा, और मैं उस टाइम करियर के पीक में था, आई हैव टू मूव बैक टू पाकिस्तान। ठीक है, वो ह्यूमन रिलेशनशिप आ गया जो हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिलेशनशिप की। तो मैंने डिसीजन ली कि यार तो समटाइम्स यू हैव टू गिव अप, you have to give up sometimes, or sometimes वो कहते हैं it is okay to say no। ठीक है, तो मैंने जो अपने गोल्स है ना वो अल्टर किए, वो मैं आ गया पाकिस्तान, क्योंकि वो मेरी वालदा साहब बहुत ज़्यादा वो थी, बीमार थी, मैं परमानेंटली मूव हो गया पाकिस्तान। जब मैं पाकिस्तान मूव हुआ तो यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट थी। मैं I'm talking about in 2017। यहाँ सिचुएशन ये थी कि ACCA को ऐसे समझ रहे थे जैसे ये कोई थर्ड क्लास क्वालिफिकेशन है और फलाना ढिंगला, क्योंकि मैं वहाँ पे काम कर चुका, मेरे आर्टिकल्स हो चुके थे वहाँ पे ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे कुछ मुझे अजीब सा फील हो रहा था, ये कि जो मैं जेन्युइन आपसे जो शेयर कर रहा हूँ। देन मैंने कहा चलो ओके, आई अप्लाई फॉर द बिग फोर। I went for the big four and I had a conversation with a partner basically एक लिंक के थ्रू में। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि यार आप इस तरह करो कि आप CA ज्वाइन कर लो। So of course you will have the articles 3 years and then आप AM के पोस्ट पे आ सकते हो, ब्ला ब्ला। मैं ये PwC की बात कर रहा हूँ, फर्गूसन की बात कर रहा हूँ। तो I was thinking like जो मैंने पूरी जर्नी, जो मेरी ड्रीम्स थे, जो मैंने सब कुछ वो अचीव किए हैं, जो जॉब्स मैंने की वहाँ उसमें मैं पानी फेर दूं और दोबारा वही क्वालिफिकेशन, वही सब्जेक्ट्स, वही चीजें मैं इवन दो आई हैव डिस्कशन विद सिमिलर पीपल्स लाइक इन PwC के जो ऑलरेडी इसी जैसे भाई ने फरमाया कि मैंने CA को स्टार्ट कर लिया सिर्फ इसलिए कि मैंने आर्टिकल्स करने थे, सिर्फ मैंने बिग फोर के लिए काम करना था। ठीक है, तो मैंने भी I have only worked for PwC for 4 months. I left it because it's not my मतलब ये मेरा वो नहीं था, वो क्या कहते हैं कि ये मैं नहीं चाहता था कि मैं ये काम ऐसे करूं। ठीक है, देन आप फिर कहते हैं यार आप जॉब के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आप कहते हैं यार आई हैव, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार मुझे एक हायर पोजीशन चाहिए कंपनी में, प्लाना डील। जब रियलिटी में जाएं, आप किसी भी यहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं और वो आपको कहते हैं यार ओके वी विल गिव यू द पोजीशन बट द पे विल बी 60,000 रुपीज, 70,000 रुपीज। लेकिन मैं अपनी सारे जो मेंबर्स हैं इसको मैं बताना चाहता हूँ ये चीज है कि जब आप अपने आप को कह देते हो, यू से यस ओके I'll work for you 10 hours 12 hours for 60,000, obviously that तो आप अपने आप को इवैल्यूएट कर चुके हैं कि आप 60,000 के वर्थ करते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आप गोल्स तो ठीक है आप सेट कर रहे होते हैं, लेकिन आपको समटाइम्स ये भी सीखना होता है कि आपने अपने गोल्स को अल्टर कैसे करने हैं, और समटाइम आपने गिव अप करना होता है। नो भी सीखना चाहिए आपको कि आप कहोगे यार नहीं ये मैं नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैंने कहा यार ये मेरे काम का नहीं है, तो आई सेट अप माई ओन बिजनेस बिकॉज आई नीड फ्रीडम, कि जिसमें मैं क्रिएटिव हूँ, जिसमें मैं अपना माइंड यूज कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह ये चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई स्टार्टेड माय ओन फर्म और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेरी वेल। सो मैं कोलैबोरेशन वगैरह वगैरह हमारे में ये होता है कि सर हमें कोई थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हम उसमें घुस जाते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं, फिर हमसे वो जो अपना जो गोल होता है ना वो मिस हो जाता है। और जैसे पाकिस्तान में नॉर्मली लोग धोखा खा जाते हैं मतलब बिग फोर की नाम पे और वगैरह वगैरह चीजों पे। तो ये मैंने एक चीज आप इसके साथ शेयर करनी थी सर। No, thank you, Faizan. Thank you for sharing. And you're very right. Every human being is born with a free will. हमें एक फ्री विल के साथ पैदा किया जाता है, हम खुद वो फ्री विल गिव अप करते हैं एंड वी स्टार्ट एक्टिंग अपॉन समबडी एल्स ओपिनियन, और हम अपने फैसले या वो इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों से देखने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज दैट्स नॉट हाउ द ह्यूमन बीइंग वाज बिल्ट और इज बिल्ट। सो हमें एक फ्री विल के साथ पैदा किया जाता है। We can make our decision
if we decide to do so, we can make our decision by ourselves. So we can do that. Thank you, Yes. Fazan, for sharing that. And that's basically where most of the people who decide that, unka career, unki story bahut farak hoti hai. Like Fazan is sharing his story as well. So if I can invite Azhar Bilal now. Yes, thank you, Sajid. I'll try to be very brief. In the video we just saw, I think it was a really inspirational video, really excellent. And I really liked the example he gave, the way he painted the picture with his words about the OKRs. He said that the what and the how are actually like vessels. And we have to like think the why is why are we filling those vessels. So I think it was a really good example and the one that stuck in my mind, and it's really helpful. Thank you. Thanks, Azhar. Thanks for sharing. And if we can request Nakash or Sir. please go ahead. Yeah. So I'd start with the last video we just saw. It includes that if we have the right the method to execute, like the execution method matters the most in order to know what direction in order to set the objectives and then how to achieve them. But sir, I would like to that I would like to ask, if you could give a comment on that, because if we stick to a specific goal or a target that but it might be possible that it cannot be realistic somehow. But even if it is related to the future, so there is lying like uncertainty. So how are we how should we like plan and accordingly in order to stick to the time frame in order to achieve the goals. And Yeah, please, if I may. I think number one, uncertainty is the beauty of setting goal. अगर आपके पास uncertainty नहीं हो तो आप goal ही set नहीं करते. You want to achieve which you can't see that right now and you don't have it right now. That's why you set it as a goal. वो आपने एक really want to go for tracking. You want to plan a vacation. You all do these things because आप उस वक्त नहीं कर रहे होते. That's why goal setting हमेशा futuristic होगी. दूसरा part, आपके लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं और शॉर्ट टर्म होते हैं. जब हम इन गोल्स की बात करते हैं तो बेसिकली दीज आर द माइलस्टोन व्हिच हेल्प यू टू अचीव द लॉन्गर टर्म गोल्स. सो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाके देखना पड़ता है. अगेन मेरा सवाल वही होगा, व्हेन यू आर नॉट देयर व्हाट यू वांट पीपल टू रिमेंबर यू फॉर. अगर आप एक कमरे में नहीं बैठे, आप क्या गुफ्तगू सुनना पसंद करेंगे अपने मुतालिक, एंड आर यू मेकिंग दैट एफर्ट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ ओपिनियन और इन्फ्लुएंस. सो अगर आपका एक गोल होगा तो फिर आपके कुछ एक्शंस भी आएंगे. जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स की बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि व्हेन फ्रॉम अ गूगल पर्सपेक्टिव दे सेट अ ऑब्जेक्टिव कि मैंने बेस्ट वेब ब्राउजर डेवलप करना है और उसका मेजर मैंने एक डेवलप कर लिया. तो मैंने एक अपने लिए गोल सेट कर दिया, अ बेस्ट ब्राउजर व्हिच कैन रियली अट्रैक्ट 20 मिलियन पीपल इन अ फर्स्ट ईयर, मे बी 50 मिलियन इन अ नेक्स्ट एंड 100 मिलियन इन अ थर्ड ईयर. सो मैंने अपने लिए वो, और ऑल्दो मैंने वो गोल अचीव नहीं किया, दो अप्रोचेस हो सकती थी ना. जब पहले साल में मैंने 20 मिलियन सेट किया और 10 मिलियन अचीव किया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए तो मुझे 5 मिलियन सेट करना चाहिए था. दैट वाज द रैशनल थिंकिंग. बट एक्चुअली द गाय हैज प्रैक्टिकली इंक्रीज्ड दैट 2.5 टाइम्स, क्योंकि एक साल गुजर चुका हुआ है. अगेन सेट अ स्केरी गोल और अपना टाइम ग्रेजुअली छोटा करते चले जाएं. That will create that push and the level of urgency or sense of urgency to achieve that one. So that's a one mindset and a methodology. नॉर्मली जो रिस्क वर्स लोग होंगे वो नेक्स्ट ईयर के लिए उसको, क्योंकि उन्होंने 10 अचीव किया है तो वो 8 सेट करेंगे, सो दे कैन अचीव इट. और ये एक बहुत बड़ी डिबेट होती है कि व्हाट इज रियलिस्टिक. मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ. आई थिंक आई शेयर दैट अर्लियर एज वेल. एक समंदर में तूफान था एंड द गाय गॉट द चॉइसेस कि वो एक सर्टेन ऑटोमेटिक बोट यूज कर ले और एक सर्टेन मोटर बोट यूज कर ले, और he can use something with chappu and he can still pass through that. He chose chappu wali boat.
And when he crossed that the entire river or ocean, people ask के आपके पास जब बाकी options थी तो आपने क्यों नहीं choose किया? तो उसका था there was a limitation. The motorboat was working on a certain horsepower, and then the automatic boat has got its own limitation in terms of technology. I don't know my limitation and I want to test that. और मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि मेरी भी कोई limitation है, and I have to really focus on that, and I managed to do that. So these are the choices. It may be irrational for some people, but for some people it may be rational. These are the choices we make. Some people are not very comfortable with a very high risk decisions, and some people are. So आपको again बात वही आ जाती है, आप कितने self aware हैं, and when you come to know yourself, do you want to change it or adopt it? So वो भी आपका एक फैसला होता है. So जो बार बार हम एक बात करते चले आ रहे हैं throughout, these are the choices which we make for ourselves knowingly or unknowingly, and then we act upon that. So अगर आप self aware होते चले जाएंगे तो आपको अपनी choices और choices की reasons भी पता चलना शुरू हो जाएंगे, and then you can make a decision to change it. If you don't like it, you can change that personality. अगर आज आप एक risk averse mode में बैठे हुए हैं, you want to have a higher risk appetite, but first you have to realize that you are in a risk averse mode. अगर आपका ख्याल है उस risk averse mode में बैठे हुए कि आप बहुत ज्यादा high risk ले रहे हैं, तो उसका benchmark जो आपने रखा था शायद वो सही नहीं था. इसीलिए key actions की या key results की जब हम बात करते हैं तो those are the measure. इसी तरह अभी हम आगे चलेंगे तो we will be talking about the role models. आपका रोल मॉडल है कौन? How you will measure yourself. बहुत आसान है, आप किसी को भी जो आपको शख्स अच्छा लगता है, you start looking around और उसमें से एक बंदे को रोल मॉडल दें, उसकी लाइफ को स्टडी करना शुरू करें, and you will figure out a lot of stuff. कि वो रोल मॉडल वहां जिस वजह से वो रोल मॉडल है, बियॉन्ड ऑब्वियस क्या चीज है. चीजें तो हमें कुछ ऑब्वियस नजर आ रही होती है ना, we don't do the research and we don't go beyond obvious. जैसे जब हम बात कर रहे थे 5 ways to kill your dream, तो उसमें बात हमें जो नजर आ रहा था फ्रंट पे कि उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया और ओवरनाइट सेल हो गया, बट जो बियॉन्ड ऑब्वियस था वो ये था कि उसने the person has spent 20 years, did masters, did PhD, रिसर्च की, 20 एप्स पहले बनाई, फेल हुआ, and but what we are seeing as an obvious one, सॉफ्टवेयर बनाओ, रात को बेचो, सुबह अमीर हो जाते हैं. It doesn't work like that. So अगर एक बंदा आपके लिए रोल मॉडल है, try to understand the journey, and that journey will help you to understand कि आपने जो चीज अडॉप्ट करनी है वो क्या है. Luckily, with the age where we are, हम रोल मॉडल आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उनकी स्टोरीज भी हमें मिल जाती हैं. एक जमाना था जब आपको बुक ऑर्डर करनी पड़ती थी और फिर आपको 3-3 महीने वेट करना पड़ता था और वो बुक आती थी और फिर आप शेयर करते थे और बुक अफोर्ड करना भी बड़ा मुश्किल होता था. आपके पास वो लिमिटेशंस नहीं है. Understand that how privileged you are in terms of accessing that kind of information, और उस इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद उसको डिप्लॉय करना है. एक और चीज जो अभी तक मेरा ख्याल है अगर आपने नोटिस की होगी कि कोई भी गोल जो आप सेट करेंगे वो डे 1 में परफेक्ट नहीं होगा. आपकी जर्नी विल ब्रिंग इट क्लोजर टू परफेक्शन, क्योंकि आपकी जर्नी में आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा, रियलाइजेशन बढ़ेगा. एक्टिंग फास्ट, फेलिंग फास्ट इज द की. आपने उस जर्नी पे शुरू हो जाना है, काम करना शुरू करना है, आपने रिजल्ट्स लेके आने हैं, एंड देन यू हैव टू कीप मेजरिंग. सो अब अगर मैं एक छोटी सी असाइनमेंट की बात करूं यहाँ पे, तो वी आर ऑलरेडी ओवर रनिंग द टाइम. सो एक छोटी सी मैं बात करूं तो मेरे आपको सजेशन ये होगा, खाली सफा पकड़ें, अपना गोल लिखें, गोल को दोबारा पढ़ें और फिर देखें कि वो गोल क्या है आपका, और उसमें से आर यू सेटिंग द राइट गोल, और उसके बाद फिर वर्क बैक करना शुरू करें कि वो क्या एक्शंस होंगे जो उस गोल को वहां तक लेके आएंगे, एंड हाउ यू विल बी मेजरिंग योर सक्सेस. आप उस एक्शन की प्रोडक्टिविटी को किस तरह मेजर करेंगे. So let's talk about it and set something which you really want to do in your life. So आपके पास objective, key results और key actions. एक और भी मॉडल है, अभी हमने बात की OKR की, there is another model called OPA, Objective Purpose Action. और उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और ये हमारे साथ बहुत ज्यादा होता है. बहुत से लोग जो फिटनेस फ्रीक बनना चाहते हैं और who want to go and join the gym, so वहां पे दो थॉट प्रोसेस होते हैं. मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, आई वांट टू अचीव a certain waist, let's say I want to become like 32 or 34, whatever I decide. So this is my objective. Purpose ये है, it feels good, right? और इसका पर्पस ये भी हो सकता है because people take notice, मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है. If somebody is a smart looking, people really listen to that person
better than the person who is not in a shape. So I'll be in a good shape, so I can influence people opinion. मैंने objective क्या है? I need to reduce my waist to X. 32, 34. Purpose, it feels good, it influence people. Action क्या है? यहाँ से आके हमारा dilemma शुरू होता है. अब इसके दो तरह के एक्शंस होते हैं जिसको आप सोच सकते हैं. एक एक्शन ये होता है, यार सुबह उठूंगा 5 बजे, उसके बाद मैं शूज निकालूंगा, जुराबे पहनूंगा, जुराबे निकालूंगा, फिर कपड़े चेंज करूंगा, नीचे उतरूंगा, मोटरसाइकिल या गाड़ी स्टार्ट करूंगा, वहां पे जाऊंगा, गाड़ी की पार्किंग करूंगा, पार्किंग से बाहर निकलूंगा, उसके बाद लेफ्ट लूंगा या सीढ़ियां चढ़ूंगा, ऊपर जाऊंगा जिम में. आई स्पेंड 20-30 minutes 40 minutes there. उसके बाद बाहर निकलूंगा, नीचे आऊंगा, वापस आऊंगा, नहाऊंगा, कपड़े चेंज करूंगा. जब आप ये लेवल ऑफ डिटेल्स पे एक्शन प्लान करते हैं ना, अब तक आप थक गए हो. इसका दूसरा वे ये होता है कि यू जस्ट डू इट इन अ बिगर चंक. ऑब्जेक्टिव है कि वेस्ट इतनी मैंने लेके आनी है, पर्पस है इट फील्स गुड, एक्शन है आई गो टू जिम एवरी मॉर्निंग. सिंपल. आपने इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना. वो जो एक्शंस आपके बाकी है ना कि शूज पहनने हैं, कपड़े चेंज करने हैं, वो आपको नजर भी नहीं आएंगे. आई वांट टू अचीव दिस वेस्ट, इट फील्स गुड. दीज आर द टू ड्राइविंग फैक्टर. एक्शंस क्या है? जाना है सुबह. उससे नीचे की डिटेल में जाएंगे तो आप वो सोचते सोचते आप थक जाएंगे. तो यू थिंक इन अ चंक एंड यू पुट दैट इन द चंक. I'll go to gym, I'll do exercise, I'll bring my waist to my whatever the goal I want to achieve, it feels good. ये तीन चीजें अगर आप दोहराते रहेंगे ना, तो that will keep that create that drive. So OPA आप यूज कर लें, OKR यूज कर लें. These are the methodology which help you to set the goal and then follow through that. लेकिन बात वही है कि आपको एक दफा खाली सफा लेके बैठना पड़ेगा. एक दफा आपने गोल सेट करना है, उसको बार बार आपने पढ़ना है. अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने उन गोल्स को कमिट करना है, बिकॉज कमिटमेंट के लिए हम सारे इकट्ठे काम करेंगे, क्योंकि उसके लिए गोल की आर्टिकुलेशन बहुत जरूरी है और वाई को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है उस वक्त बिफोर वी स्टार्ट आवर जर्नी. सो पहला काम आपका ये है, खाली सफा लें, गोल सेट करें और उसके लिए जितने पाथ बनते हैं वो सारे पाथ वहां पे लिखें. व्हाट एल्स कैन लीड देयर. सो अगर मैं बात करूं कि आपने एक कराची में मज़ार कायद पे जाना है, या पाकिस्तान में मीनारे लाहौर में आपने मीनारे पाकिस्तान पे जाना है, या कराची में मज़ार कायद पे जाना है, तो वहां तक पहुंचने के बहुत रास्ते हो सकते हैं. आपका गोल ये है कि आपने वहां पहुंचना है, और बहुत सी ऐसी सड़कें भी होंगी जो ब्लॉक होंगी, बट यू विल फिगर इट आउट, क्योंकि आपको ये पता है कि आपने मज़ार कायद पे जाना है बिकॉज इट फील गुड और व्हाटएवर द पर्पस यू हैव. सो बाकी रास्ता हम फिगर आउट कर लेंगे. अगर आपको रास्ता नहीं मिलेगा, यू विल कॉल समबडी, यू विल आस्क फॉर डायरेक्शन, यू विल यूज गूगल मैप. और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं यहाँ पे, और एक बड़ा अच्छा सवाल मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे इसका जवाब मांगूंगा. अगर आपने कराची में हैं और पीपल हु आर फेमिलियर विद लाहौर, अगर आपने अपने घर से मज़ार कायद या मीनारे पाकिस्तान तक पहुंचना है, तो उसका क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या क्या तरीका हो सकता है उस जगह पहुंचने का. एंड द क्वेश्चन व्हिच आई लीव यू, आपने जो भी जवाब मिले उसके बाद आपने कहना है व्हाट एल्स. सो आपने अपने घर से मज़ार कायद तक पहुंचना है, एंड व्हाटएवर आंसर यू गेट, write it down, and the next question you have to ask, what else. Just try that one and try to get a white paper and start writing your goals, और उसकी articulation करें और कोशिश करें what और why को क्लियर करें. जो how वाला आपका पार्ट आए वहां पे उसको छोड़ दें उस वक्त गोल सेट करते हुए. वंस यू आर कंफर्टेबल कि आपने गोल सही सेट कर लिया, 2 से 3 घंटे लगेंगे वो 30 वो वर्ड्स लिखते हुए. आई कैन टेल यू राइट नाउ. उसके बाद आपने देखना है कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या तरीकेकार हो सकते हैं. ठीक है. सो ये आपके लिए मैं एक स्मॉल असाइनमेंट आज के लिए छोड़ रहा हूँ. And thank you very much for joining. I hope you will you have enjoyed that one. ये videos हैं, I'll encourage you कि 1 से 2 दफा इन videos को दोबारा जरूर देखिएगा. और thank you for joining. Over to you, Haru. Thank you very much, Sajid. Very interesting session. Gee, so interesting conversation, and I will not take too much time now because we've already run about 30 minutes over. But wasn't that conversation engrossing and very detailed? So goal setting with a purpose. I think that's the beginning of the journey. I really enjoyed the session. Really enjoyed the thought-provoking videos. I think you got a good assignment to
to complete as well. So what you're going to do is आप जब ये कर लेंगे तो उसके बाद हम next session में इसको discuss करेंगे. This week you will probably not get time to do your teamwork activity. So we will look at the next week to do it. ठीक है, मैं कोई special session इसके लिए plan कर दूंगा. So I think अब हम third day of Eid यानी कि Monday को मिल रहे होंगे दोबारा. So till then, take good care of yourself. I can see comments about today's session also. I think it was truly insightful, and you're right, Tehmina. The group discussion will be in the next week, but will probably be on Tuesday. So आपके next session के बाद जो Monday को होगा उसके बाद हम एक teamwork activity करेंगे इसके ऊपर. Okay, और Monday तक कोई थोड़ी सी clarity भी further detail भी on goal setting हमें मिल चुकी होगी. So I think we'll take it one step further from there. Okay, thank you very much. Keep your feedback coming. That's encouraging. Mind changing session, yes, indeed. Hasib, you're very right. Thank you, Sajid, rather. A very, very detailed conversation. I was only listening and enjoying. Very different session. Yes, indeed. Yes, indeed. All right, thank you very much. And likewise, for Hajj and Eid Mubarak to all of you in advance on behalf of ACCA, on behalf of the team at ACCA. So, मैंने आज भी एक email circulate की है, stay connected, right? So encourage you all to stay connected. I think this is very, very important, very interesting networking already starting to happen. So stay connected, and inshallah we'll meet on Monday next. Okay, Wasim, आपने ये question पहले भी पूछा था about the recording of the previous sessions. मैंने ग्रुप M का इनवाइट भेजा हुआ है, उसके अंदर एक लिंक है जिसपे पूरी पिछले सेशंस की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं. तो अगर आपके पास ग्रुप M का इनवाइट आपको मिल जाता है, तो जो कि संडे की रात को मैंने भेजा था, राइट, तो आप उसको देखें. उसके साथ एक लिंक है जिसमें पिछली पूरी सेशंस की रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स मैंने डाले हुए हैं. सो आप उसको प्लीज एक्सेस कर लें. अगर आपको नहीं मिलता तो प्लीज मुझे बताएं, एंड आई कैन लुक फॉर समथिंग फर्दर. All right, thank you very much. हम WhatsApp ग्रुप के ऊपर बात कर रहे होंगे. Monday session is not there. Monday session is there. Monday, Wednesday, Friday. The next session falls next Monday. तो सीम आपको मैं ख्याल है कुछ confusion है, आप मुझसे अलग से बात कर लीजिएगा. I think everybody else is in the session. So Monday, inshallah, we'll meet again. Take good care of yourself. Enjoy your Eid, and take care. Allah Hafiz.